I think I'm live. So, hi guys, this is Prasoon Varshney from Prasoon Varshney channel, and you are currently watching Study with SAP study series. Okay, this is not just productive. This is not just live stream. There, this is productive live stream. Here we do productive stuffs like polishing skills. Hello, man. So what I'm telling here, we do all the productive stuffs with consistency and productivity. Okay, so this is video number 38, I guess. Okay, this is video number 38, and today सर आपकी बर्थडे आ रही है, हम आपको गिफ्ट देना चाहते हैं। क्या लोगे सर आप? लैपटॉप दिलवा दो, बुलवा सकती हो तो परेशान हो गया हूँ। एक लैपटॉप, एक मोबाइल, ज़्यादा करना नहीं है। लैपटॉप दिलवाते हो। So what I was telling, this is video number 38. Okay, 30 days of consistency, 38 days of productivity. I think हमने ज़्यादा से ज़्यादा एक दो दिन या दो दिन की छुट्टियाँ ली होगी बीच में due to some emergencies, but rather than I intentionally never take leave by myself. Okay, मतलब means to enjoy the session, मतलब to enjoy the day or stuff like that. I never take leave from session from these session due to that reason. Okay, so yeah, it does good. So it is almost 10 p.m. and we are setting a target for 4 sessions. I think we are setting a target for 4 sessions. ये कहाँ गया? कोई तो चुका कोई go to 4 sessions. Okay. So what we will study today? We will study programming in 85 and programming in C. First we will do programming in 85, then we will see programming in C. That's it. It's a simple target. Okay. We will achieve that with all the energy I have. I know I was tired the whole day, the classes and घर का काम and homework. बहुत stuff there out. So okay, so let us start without any delay. Let us start. सोच कितना मजा आएगा जब हम तुम चारों के विषय। अच्छा बताऊँ ना? I know. I can be a good singer, you know.
बीते मुझको से जाके तो चाहे जाए ओ let's start a video so can you ये कौन सा पता समझ आ गया था बोल देता लगा ही नहीं ओ धीरे धीरे बहता जाए जाए motivation, you have to motivate yourself. All you think, but you know that I always a problem with my lappy. I don't know when can I purchase a new lappy. Hello people, I'm Bharat Acharya. Welcome to our new video. So in today's video we're going to learn branch instructions of 8085 into PC. Look at this. Jump to you write jump. Next to jump, you write the location where you want to jump. On paper we write an address. In practicals you write a label. If you want to jump to this instruction, 1000 under normal circumstances you go to the next location and carry on, but for some reason you want to jump directly to location 2000, so you write jump 2000. So that's the first instruction I'll be teaching you, the whole working of that instruction. Then that was an unconditional jump. These are conditional jumps, JC, JNC, that is jump if carry, jump if no carry, jump if zero, no zero, etc. Some of them are useful only from academic purpose, that you need to know that these instructions exist. Some of them are very useful from programming point of view, especially the first four. Okay, for any add subtract program you need to check the carry flag, so you need jump if carry, jump if no carry. And JZ, JNZ are useful in looping, etc. This is what I'm going to teach you. I'll teach you examples of using JNZ and creating loops. I'll be doing 2-3 examples one after the other over here. Then we come to the big instruction.
call instruction. In timing diagrams, call has the biggest timing diagram of 8085, that is 18 T-states. So first I'll be teaching you the instruction. What is the difference between a jump and a call? How does a call work? A call is always accompanied with a return, so I'll be teaching you both. The way to go to a subroutine, that is call instruction, and the method to come back, that is return instruction. So you'll be doing call and return. Again, call and return also have conditional forms, but they're the same as conditional jumps. So I'll just be telling you what they are. They're the same as conditional jumps. And then finally, the shortcut to do call. There is a shorter version of call called RSTN, also called as software interrupts of 8085. So there are 8 RSTN instructions, RST0 to RST7. So we'll be covering that. So that's basically the scope of this whole video. Now, okay. So you begin with our first instruction, jump. Understand jump properly. Okay. Once you get this one, you'll understand all of them. This will lay the platform for it. Now, when you write jump, next to jump, you write the location where you want to jump. On paper, we write an address. In practicals, you write a label. If you want to jump to this instruction, next to it, you write a label like down or label or any name that you want to with a colon, that becomes a label. And you write jump with that label. When the assembler sees the label, the assembler substitutes the address. So in reality, there'll be an address over here. If the programmer knows the address, he or she can put it. Otherwise, just put a label, the assembler will substitute the address. Anyway, so when I write jump 2000, my intention is to take a jump to location 2000. Are you clear? Now, program was going in a sequential manner. When UP reached over here, PC was 1000. As soon as this instruction will be fetched, PC will get incremented, assuming that the program will go in a sequential manner. But after fetching comes decoding, after decoding comes execution. When this instruction will be executed, new P sees that you have written a jump. That means your intention is no longer to go in a sequential manner, you want to go somewhere else. You have given the address 2000. You want the next instruction to be fetched from location 2000. Who gives the address of the next instruction? PC. That means this number will be put inside PC. Mu P will fetch this instruction, take the number 2000, put it into PC. This instruction is over. Now, because PC has become 2000, the next instruction will be automatically fetched from 2000. That means the program takes a jump to this location. That's it. That's your jump instruction. So if you write jump 8000, that means PC has become 8000. You write jump 4000, PC gets 4000. So on and so forth. Now, the basic idea of the instruction is over, but we're going to explore this a little more. We're going to take an X-ray of this and examine this more. Why? There are more things to learn. You want to understand complex instructions like call, you need to really dig and understand jump properly. Okay, so you're going to spend 5 minutes on this now. Look at this, jump 2000. Do you understand how to read the size of an instruction? I have done this in previous videos. This is a 3-byte instruction. Tell me, how is it 3 bytes? This is assembly language. When this instruction is converted into machine language, there will be an opcode for this instruction. Now you tell me, yes. Will there be an opcode for jump 2000 or will there be an opcode for jump? Exactly, jump. How can there be an opcode for jump 2000? Then there will be one more opcode for jump 2001, for jump 2002, like this. There will be infinite opcode for just jump instruction. So that is not possible. So a number is never a part of an opcode. A number is an operand, 2000, and jump is your opcode. So this is the operand, this is the opcode. All opcodes are of 1 byte. So this is 1 byte. 20 is 1 byte. 00 is 1 byte. H of course is not there. That is, every number is hexadecimal. So altogether this becomes a 3-byte instruction. Do you understand? Since it's a 3-byte instruction, it will be written at 3 locations. You understand that also? If you enter programs on that kit, you know this is a 3-byte instruction, requires 3 locations to enter it. Because one location carries only 1 byte. So at 1000 will be the opcode of jump. At 1001 and 1002 will be this address 2000. Again, I'm sure you know the principle, lower byte, lower address, higher byte, higher address. So this 2000 will be written as 00 and as 20. This is how the instruction will actually look like when it is in the memory. Are you clear? On paper, it was jump 2000. When stored in the memory, it will be looking like jump at 1000. 1001 will carry 00. 1002 will carry 20. This is your full instruction. Are you so far clear? The next instruction, whatever it would be at 1003. Now, MUP begins this instruction. First of all, PC is 1000, MUP will fetch jump. This is the opcode. The first byte of every instruction is the opcode. MUP will fetch it,
and will also decode it. That cycle is called opcode fetch if you've seen timing diagram video. So MUP will fetch the opcode and decode it. On decoding, it will understand this is jump. Since this is jump, MUP knows it's a 3-byte instruction, so 2 more bytes are remaining. The moment this byte was fetched, PC becomes PC plus 1. The moment any instruction byte is fetched, PC gets incremented. So when this was fetched, PC was 1001. MUP will fetch 00, PC will become 1002. If for your knowledge, this is only for your knowledge, 00 will be held in Z. You know there is WZ temporary register pair. So MUP will put the 00 in Z. Now the instruction is still not complete. There is one more byte remaining. MUP will fetch 20, put it in W. At that point, PC is 1003. What is over? Fetching is over, not execution. Fetching is over. During fetching, decoding takes place. Decoding is only done for the first byte, the opcode. So your fetch and decode is over. Execution is not over. So between fetching and execution, this is the point I want you to understand. You understand this point, you'll understand call. People say call is tough because they don't know how to learn it. I mean, I'm just saying. People directly learn big things about call and they say, oh my god, what the hell is going on? That is because you have to first understand how jump works. This point alone will make you understand call. When fetching is over, execution is not over. Between fetching and execution, at this point, PC is 1003. Till now, the instruction has been fetched. This number 2000 has come inside the MUP and is temporarily held in the WZ pair. Are you clear? Now, MUP sees this is jump instruction. Jump means PC has to get a new value, and jump works. This point, the fetch and decode is over. Execution is not over. So between fetching and execution, this is the point I want you to understand. You understand this point, you'll understand call. People say call is tough because they don't know how to learn it. I mean, I'm just saying. People directly learn big things about call and they say, oh my god, what the hell is going on? That is because you have to first understand how jump works. This point alone will make you understand call. When fetching is over, execution is not over. Between fetching and execution, at this point, PC is 1003. Till now, the instruction has been fetched. This number 2000 has come inside the MUP and is temporarily held in the WZ pair. Are you clear? Now, MUP sees this is jump instruction. Jump means PC has to get a new value. MUP will put the value 2000 into PC from WZ. This is the execution of this instruction. Because of this, now this instruction is over. Till now PC was 1003, program would have gone here, but no, program will fetch this instruction after this execution is completed. When this execution is completed, PC will get 2000. Because PC will get 2000, program will take a jump to location 2000 and PC sees this is jump instruction. Jump means PC has come inside the MUP and is temporarily held in the WZ pair. Are you clear? Now, MUP sees this is jump instruction. Jump means PC has to get a new value. MUP will put the value 2000 into PC from WZ. This is the execution of this instruction. Because of this, now this instruction is over. Till now PC was 1003, program would have gone here, but no, program will fetch this instruction after this execution is completed. When this execution is completed, PC will get 2000. Because PC will get 2000, program will take a jump to location 2000 and continue. Please tell me, did you understand? So the point that I wanted you to understand was, even though in spite of the fact that this was a jump instruction, in spite of that, PC momentarily will contain address of the next instruction. We are not fetching this instruction, but PC momentarily will contain this address. Is this point clear? When is this happening? Between fetching and execution. Fetching is over, but execution is not over. At that point, momentarily PC was 1003. Where was this number 2000 held? In WZ. During execution, WZ will put the number into PC. That is how the next instruction will be fetched from 2000 and not 1003. Please tell me, did you understand this? Now, that was your jump instruction. Now, before we go ahead and learn the big one call, there's something about jumps that you need to know. This is called unconditional jump. It's just a jump. There are also conditional jumps. So when you write JC, the difference between writing jump 2000 and JC 2000 is jump 2000 will always jump to location 2000. JC 2000 has two options depending upon whether the condition is true or false. If the condition is true, jump if carry.
Jump if carry means you will check the carry flag. If carry flag is 1, the condition is true. PC will get 2000. If you written JC 2000, PC will get 2000 and program will take a jump to location 2000. If the condition is false, you said jump. If carry, there is no carry. That means carry flag is 0. That means we don't have to jump. If we don't have to jump, PC will not get 2000. It will not get 2000. What will it get? Nothing. By the time fetching is over, PC is already with the address of the next instruction. So nothing will happen. PC will simply get the address of the next instruction, which if what will it get? You said is true or false. If the condition is true, jump if carry. Jump if carry means you check the carry flag. If carry flag is 1, the condition is true. PC will get 2000. If you written JC 2000, PC will get 2000 and program will take a jump to location 2000. If the condition is false, you said jump if carry, but there is no carry. That means carry flag is 0. That means we don't have to jump.
If you don't have to jump, PC will not get 2000. It will not get. MVI immediately भाई मतलब थोड़ा सा 20H भाई थोड़ा क्या कह रहे हो? कर कैमरा थोड़ा सा राइट में कर। हाँ बस अब सही। हाँ बस सही है। ठीक है। MVI इमीडिएट डेटा को बी रजिस्टर में डाल देगा। दूसरा पढ़ता हूँ LXI, ये तुम्हारा होता है लोड रजिस्टर पेयर इमीडिएटली। जहां जहां पर X आएगा वहां पर रजिस्टर पेयर यूज होंगे। तुम्हारा BC DE HL ये हमारे 16 बिट रजिस्टर पेयर्स हैं जिसमें 16 बिट ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं। हमें पता है कि एक रजिस्टर 8 बिट के होते हैं, राइट? LXI अगर B करते हैं 20, जहां जहां पर X होगा और वो रजिस्टर पे है। हमें I मिला यहाँ पर। I immediate data. This is not an address, this is a data, ठीक है? बिकॉज यहाँ पर रूल होना था हमारा L मतलब लोड, X मतलब रजिस्टर पेयर। B क्यों यूज किया? हम C भी कर सकते थे बिकॉज BC पेयर में ये हमारा हायर बिट होता है, दिस इज अवर लोअर बिट। तो B यूज करते हैं तो ऑटोमेटिकली BC पेयर आ जाता है क्योंकि हमने X यूज किया हुआ है। दैट्स व्हाई वी हैव रिटन B। अगर DE पेयर यूज करना होता तो हम सिर्फ हायर बिट का D यूज करते हैं। अगर HL पेयर यूज करना होता तो हम लोग H यूज करते हैं अपन हायर बिट। इन बिट हो जाएगा दोनों पेयर में। 20 हमारा हायर बिट चला जाएगा, 00 हमारा L में चला जाएगा इफ वी आर यूजिंग HL पेयर, ठीक है? देख लिया, हटा दूं इसको? भाई LXI वाले में जो 16 बिट का डाटा जो ट्रांसफर करते हैं तो वो सीधा H और L में जाता है ना डायरेक्ट? हाँ देखो, जब भी हम ये इस इंस्ट्रक्शन को प्ले करते हैं हमारे म्यूपी में, म्यूपी क्या करता है, ये हमारा ऑपरेशन ऑपकोड है, ऑपरेशन कोड है हमारा LXI H। ये हमारा 2 बाइट का डेटा है। ऑपकोड फेच के समय हमने टाइमिंग डायग्राम देखा था जिसमें 4 टाइमिंग T स्टेट्स यूज हुई थी इसको फेच करने के लिए। देन फोर्थ जो T स्टेट यूज करते हैं, 3 T स्टेट्स तो हमने सिर्फ रीड करने के लिए किया इसको। लास्ट की स्टेट को यूज करते हैं फॉर डिकोडिंग, राइट? हमारे आर्किटेक्चर के अंदर जब भी ये इंस्ट्रक्शन जाती है तो पहले इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जाती है, देन जाती है डिकोडिंग रजिस्टर के अंदर। यहाँ पर वो इस एक क्लॉक साइकिल में इसको डिकोड करेगा, देन इट विल नो कि दैट यस एक्चुअली क्या करता है, ये इस इंस्ट्रक्शन को, दिस इज ऑपकोड है हमारा, ये हमारा 74 इंस्ट्रक्शन जो प्री हमारे डिफाइंड होते हैं म्यूपी में, वहाँ चेक करेगा। उनमें से कोई एक अगर होगा देन उसे पता पड़ेगा कि हमारे पास 2 बाइट ऑफ डेटा या ऑपरेंड हमें लाना है फिर से। तो वो 2 मशीन साइकिल में
पहली बार इसको स्कोर आएगा, दूसरी बार स्कोर आएगा। समझ में आ रही है? मेमोरी रीड टाइमिंग डायग्राम से। भाई इसकी मेमोरी रिक्वायरमेंट कितनी होती है? दोनों वाले बता दो, एमवीआई वाले भी और उसकी भी। हाँ ओके, यस। इसका जो प्रोग्राम, इसका जो पूरा इस वाले इंस्ट्रक्शन का जो भी हमारा क्या कहते हैं मेमोरी रिक्वायर्ड होगी, इसके लिए 1 बाइट होती है। हमेशा 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 ऑप कोड 1 बाइट का ही होगा। हमारा इंस्ट्रक्शन 1 बाइट का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है। ठीक है, ये हमारा ऑप कोड है क्योंकि ये हमारा यूनिक है। MVI B इज एन ऑप कोड, 75 इंस्ट्रक्शन में से एक है। MVI C इज आल्सो अवर ऑप कोड, 74 इंस्ट्रक्शन में से एक है। अच्छा। MVI A भी ऑप कोड है। ऑप कोड ये क्यों नहीं है, मतलब ये पूरा MVI A 20H भी तो ऑप कोड हो सकता है। वो पूरा इंस्ट्रक्शन है ना, फिर Yes. बहुत सारे हो जाएंगे अगर ना ये हमारा इनफाइनाइट। ऑप कोड होगा, अगर ये हमारा ऑप कोड हो गया, मान लो हो गया ऑप कोड, तो हमें MVI A 20 के लिए अलग ऑप कोड चाहिए, MVI B 21 के लिए अलग चाहिए, 22 के अलग चाहिए, तो ये बहुत सारे बन जाएंगे। तो हमें सिर्फ एक यूनिक और दूसरा हमारा क्या दूसरा बोल हमारा रहे? नहीं समझ आया, रिपीट करना। सी मैंने ये कहा कि 74 इंस्ट्रक्शन टोटल है, ठीक है। 74 इंस्ट्रक्शन में सभी इंस्ट्रक्शन का अपना खुद का एक ऑप कोड होता है, जो म्यूपी समझता है फैच करने के बाद कि उसमें आप करना क्या है। हमें पता है कि MVI मतलब मूव इमीडिएटली होता है, बस म्यूपी को नहीं पता ना, तो उसके पास ये सारे इंस्ट्रक्शंस पहले से ही अपने मेमोरी में उसमें इनबिल्ट होते हैं, प्रोग्राम्ड होते हैं। तो क्या करता है, इसको फैच करने के बाद उसे पता चलता है कि यस दिस इज अवर, ये हमारा क्या कहते हैं, ये इंस्ट्रक्शन है, सॉरी ऑप कोड है, निमोनिक है, ये निमोनिक है, ये हमारा रजिस्टर है। अब ये समझेगा कि मुझे एक 8 बिट का डेटा, यार ये बहुत लेट लोग आ रहा है, बार-बार नहीं करना पड़ रहा है। 8 बिट का डेटा रिक्वायर्ड है जिसे हमें फैच करना है अगली साइकिल में, ठीक है। तो फिर उसको फैच करता है। इसके लिए यूनिक ऑप कोड होगा, दिस इज ये हमारा ऑपरेंड है। हर एक ऑप कोड 1 बाइट का होता है, 1 बाइट होता है, और इंस्ट्रक्शन टोटल 1 बाइट का भी हो सकता है, 2 बाइट का भी हो सकता है, 3 बाइट का भी हो सकता है। लेट सपोज इसकी बात करते हैं, इसमें 1 बाइट का ये रहा ऑप कोड और 1 बाइट का ये ऑपरेंड रहा, टोटल 2 बाइट इंस्ट्रक्शन हो गई टोटल, ठीक है। इसमें LXI H 1 बाइट, ये हमारा डेटा है, कितना बाइट का है, 2 बाइट का है, 2 बाइट, टोटल 3 बाइट का हो गया, ठीक है। समझ आई, ये बात समझ आई? हाँ ठीक है। चलो। अब मैक्सिमम कितने बाइट तक का हो सकता है इंस्ट्रक्शन? 3 का हो सकता है मैक्सिमम, ठीक। 3 का मतलब पूरे 74 इंस्ट्रक्शंस में से कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन को क्रॉस करता है ना? नहीं। ओके। अरे मुझे वो जगह समझ नहीं आई, वो जो पूरा इंस्ट्रक्शन है उसको ऑप कोड क्यों नहीं बोल सकते, लाइक MVI A 20H। ओके 74 इंस्ट्रक्शन टोटल है हमारे पास, ये समझ आई? हाँ। अब 74 इंस्ट्रक्शन टोटल है, अगर हमारा इंस्ट्रक्शन कोड ऑप कोड इसको अगर मान लें हम, इस पूरे को, दैट मींस इस पूरे इंस्ट्रक्शन का एक यूनिक बाइनरी कोड होगा, ठीक है। अगर इसके लिए मानते हैं तो हमें 21 को भी के लिए भी मानना पड़ेगा, 22 के लिए भी मानना पड़ेगा, जितने नंबर बन सकते हैं सबके लिए मानना पड़ेगा, व्हिच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमारा जो क्या कहते हैं, मतलब जितने भी डेटा, जो भी अलग अलग डेटा लेंगे उसके लिए पूरा मतलब अलग अलग डिफाइन होना चाहिए वो इंस्ट्रक्शन, उसके लिए अलग डिफाइन करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई फिर इसके लिए हमारा आउटपुट मान लिया हमने इसको ऑपरेंड माना, ताकि मैं अलग अलग डिफाइन करना पड़ेगा लोगों को। ओके ठीक है, तो ये हटा रहा हूं मैं अभी। तुम्हारा है तीसरा भी MPI है। इसमें क्या करेंगे, मेमोरी का यूज करेंगे, ठीक है। मेमोरी मतलब M,
फिजिकली m कुछ नहीं है, m इज समथिंग लाइक, m किसको पॉइंट करेगा, HL पेयर को, ओनली HL पेयर में हमारा जो भी चीज होगी एज अ डेटा, मान लो 2001H इसमें स्टोर्ड है, दिस इज आवर 16 बिट रजिस्टर, यस वी नो इट, 2001 is an data for this, but for m this is an address. समझ आई बात? वो सिर्फ इसको देखेगा, जहां पर भी m यूज होगा वो इसको देखेगा, इसमें क्या है, इसमें 2001 है, यस दिस विल अंडरस्टैंड कि यार ये मेरा डेटा नहीं है, ये हमारा एड्रेस है, इसको वर्क करेगा एड्रेस को। MVI m अगर 20 करते हैं 20h, फिर से मूव इमीडिएटली, समझ आ गई, आई इमीडिएटली, दैट्स मीन ये हमारा डेटा है। m फॉर एग्जांपल ये हमारा मेमोरी है, 2001 2002 2003, किसको पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है, ये एड्रेस डेटा पूरा यहां जाएगा। लाइक ठीक है, इस डेटा को इस मेमोरी एड्रेस पे पहुंचाना है, हमने ये इंस्ट्रक्शन यूज किया, समझ आई वाली इंस्ट्रक्शन MVI m, हम यहाँ पर रजिस्टर यूज नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर सीधा मेमोरी एड्रेस यूज कर रहे हैं, राइट? ये समझ में आया इतना? नहीं आया। नहीं आया? ऋषि बोलो। लाइक जितने भी मेमोरी एड्रेसेस होते हैं वो सभी 2 बाइट्स में 4 बाइट्स में होते हैं ना, नहीं 2 बाइट्स में होते हैं ना सारी मेमोरी एड्रेसेस। हमें पता है कि हमारा जो 8085 है वो 8 बिट का डेटा यूज करता है एंड 16 बिट एड्रेस लाइन यूज करता है, राइट? 16 बिट मतलब 2 बाइट, दैट्स व्हाई हमारा जो एड्रेस होगा वो 2 बाइट का ही होगा ऑलवेज इन दिस 8085। ओके ठीक है, ठीक है, अभी दोबारा समझाता हूँ। जिस तरीके से हमने यहाँ पर B यूज किया था, B क्या था, रजिस्टर था, राइट? हमने मूव इमीडिएट, अरे एक बार नहीं इसका वो बताना कि इंस्ट्रक्शन H में कौन सा रखता है और L में कौन सा रखता है एड्रेस, वो उसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है। मतलब कि फिर से बोलना, मतलब ये 20 किस में रखेगा, H में रखेगा कि L में रखेगा, और 01 किस में रखेगा। अच्छा, ठीक, ये क्या है, हायर बिट का है, ये लोअर बिट्स का है। ऊपर की जो 8 बिट्स आएंगे वो इसमें आएंगे, लोअर की जो 8 बिट्स आएंगे इसमें आएंगे। सेम एज BC पेयर में होता है, जब भी हम BC पेयर, HL पेयर और DE पेयर लिखते हैं तो ये लोअर बाइट है, ये हायर बाइट्स है, ये लोअर बाइट, ये हायर बाइट, इसमें 2001 2001 इस तरह से आएगा। अब समझ आया ये? तो ऐसे यूज करते हैं। और जब भी हम पूरे HL पेयर को या BC पेयर को या DE पेयर को यूज करेंगे तो हम सिर्फ हायर बाइट को लिखेंगे कहीं पे भी, राइट? अगर यहाँ हम LXI कर देते हैं, LXI, तो मैंने पहली वाली इंस्ट्रक्शन बताया था, वहाँ पर हम H यूज करेंगे, सिर्फ HL यूज नहीं करेंगे। बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड है, क्योंकि हमने X यूज किया हुआ है, बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड है कि HL पेयर यूज होगा, रजिस्टर पेयर ही यूज होगा, तो H से ही हम डिफाइन कर देंगे। और यहाँ पर 2001H कर देंगे, राइट? समझ आया ये पूरा राघव? ये तुमने बोला कि MVI बस HL पेयर को ही, मतलब MVI M अगर लिखते हैं अपन तो वो बस HL पेयर को डिनोट करेगा, लेकिन कल मैंने एक प्रोग्राम करा था उसमें MVI पहले MVI M करने से पहले मूव करा था D पे, तो वो DE पेयर को भी करता है। DE पेयर को भी करता है? हाँ वो करता है, HL पेयर को बस नहीं करता है। अच्छा, HL पेयर में जो भी डेटा होगा उसको ME इसको ही करेगा, DE को नहीं करेगा। ये पक्की बात है। DE को भी कर रहा था, वही तो पूछ रही हूँ कैसे। HL पेयर को जैसे तुमने बोला बस HL पेयर को ही करता है ना, उसमें DE पेयर को भी कर रहा था, मैंने D करके करा था। प्रोग्राम दिखाना मुझे, क्या करना, चैट में पेस्ट कर देना, LXI DE 2001 करना, 2001H पे तुम क्या करना, डेटा रखना 32,
ठीक है। फिर क्या करना, MVI M यूज करना, और तुम ये करना कि 20H कर देना। अगर 20H इसकी जगह ओवरराइट हो जाता है, दैट मीन्स तुम्हारा DE पेयर काम आ रहा है, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। M DE पेयर को करेगा नहीं यूज, पक्की बात है। HL पेयर भी करेगा, अगर करता है तो फिर कल बताते तुमने कभी करके देखा है क्या ऐसे? हाँ, डी करके तुमने कभी ऐसे एग्जीक्यूट करके देखा है क्या? हाँ, ओके ठीक है, एक बार मैं फिर से रीचेक कर लूंगी। हाँ, एक बार चेक कर देना, फिर मुझे ग्रुप पे बता देना मतलब क्या है, या DM कर देना प्रोग्राम के साथ। ऑफकोर्ड लिखे हुए हैं ऋषि हाँ, ये जो पहला MVI, अगर मैं लिख रहा हूँ MVI 20H और एक लिख रहा हूँ मैं इंस्ट्रक्शन MVI M 20H, इनमें दोनों में एलिमेंट्री डिफरेंस क्या है इन दोनों में? इसमें है कि वो, हाँ तुमने कहा MVI 20H और MVI मतलब MVI A20H मतलब वो मैं, अच्छा A20H, ओके, और इसमें लिखता हूँ M। देखो कहीं कहीं पे क्या होता है, सी चलो मान लेता हूँ यार, मैं तुम्हें इसका आंसर आगे दूंगा जब हम पूरा ब्लॉक ट्रांसफर करेंगे। ओके ठीक है, पूरा ब्लॉक ट्रांसफर करेंगे तो उसमें मैं इसको बताऊंगा। ये हमारा ये जो इंस्ट्रक्शन है, ये रजिस्टर यूज कर रहा है A। ये इंस्ट्रक्शन है, ये हमारा मेमोरी एड्रेस यूज कर रहा है विच इज इन HL पेयर। अच्छा, मेमोरी एड्रेस मतलब हम विच इज इन HL पेयर, इसका मतलब है कि मूव इमीडिएटली दिस डेटा टू दैट मेमोरी एड्रेस विच इज पॉइंटेड बाय HL पेयर। ओके, समझ में आ गई। मतलब HL पेयर में उस मेमोरी का एड्रेस होता है और वहां पे हमें डाटा ट्रांसफर करना है वहां पे। एग्जैक्टली, ये मेमोरी हमारी, ये लिखा हुआ है देखो, HL लिखा हुआ है 2200H हमारे पास है पहले से ही, मान लिया। तो 200H 2001 में जाएगा 20 जो डेटा होगा, जो भी इस इंस्ट्रक्शन के द्वारा। एलिमेंट्री डिफरेंसेस ये हैं। हम A रजिस्टर कहां पर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि होता क्या है, अगर मान लो कि बहुत सारा डेटा है, ठीक है, और ये गया हुआ है 2030, ठीक है, और हमें यहीं पर एक ब्लॉक ट्रांसफर करना है, मतलब इस पूरे को यहाँ ट्रांसफर करना है। इसका एड्रेस है 3000 से 3030 तक। तो हम ये यूज करते हैं, बार बार ये यूज करेंगे, तो इसके लिए भी ये फिर यूज करेंगे, इसके लिए करेंगे, इसके लिए कैमरा थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ऊपर ऊपर ऊपर। अगर ब्लॉक ट्रांसफर करना होगा ना, तो 2001 से 2030 तक जो सीरीज ऑफ डेटा है, सीरीज ऑफ डेटा एड्रेस में पड़ा हुआ है, उसको हम 3000 से 3030 तक ट्रांसफर करना है। अगर हमें, तो हम अगर A यूज करेंगे तो हमें बार बार वो इंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा, ये वाला इंस्ट्रक्शन बार बार लिखना पड़ेगा। बट अगर हम MVI M यूज करते हैं तो हम सिर्फ M को इंप्लीमेंट करते हैं, और बार बार हमारा जब तक क्या कहते हैं, तो फॉर लूप जैसे काम करता है ना, लूपिंग की तरह काम करेगा, नीचे कंडीशन लगा देंगे। ओके ठीक है। तो यहाँ पर हमें M यूज करना पड़ेगा, बहुत इजी हो जाता है यहाँ पर M यूज करना। ये कम डेटा भी लेगा तुम्हारा, अगर ये यूज करेंगे तो ज्यादा इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम का तुम्हारा जो क्या कहते हैं उसको, प्रोग्राम का जो लेंथ ऑफ कोड, हाँ लेंथ बढ़ जाएगी। ये बात बताना, ये भी करना। हाँ क्या कह रहे हो कार्तिक? MVI M20H लिख रहे हैं, तो अपन को पहले MVI H और L की वैल्यू स्पेसिफाई करनी पड़ेगी ना, जैसे MVI L20H या एग्जैक्टली HL का हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा, HL में क्या है। दैट्स व्हाई मैंने ये इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, पहले हमने DE पेयर में 2001 डाला, फिर मैंने मूव M कॉमा, हमारा ये कॉमन लगाएंगे, मूव M स्पेस 20H किया हुआ है।
I'm a quick learner. It's good. इसका अलग आउटपुट होगा, इसका अलग आउटपुट होगा, इसका अलग आउटपुट होगा, राइट? समझ रहे हो? तो ये चीज है। अब हम अगला लेते हैं, मेमोरी एड्रेस को लेते हैं। एम को कैसे यूज करेंगे? इसकी मेमोरी रिक्वायरमेंट कितनी होती है चौथे वाले इंस्ट्रक्शन की? 1 बाइट। नेक्स्ट, फिफ्थ, MOV। MOV में B, M। What this instruction says, इंस्ट्रक्शन बोलता है कि जो भी डेटा एज अ डेटा, मैं डेटा क्यों बोल रहा हूँ, 2003 H Basic idea of the instruction. Jump at 1000, 1001 will carry 00, 1002 will carry 20. This is your full instruction. Are you so far clear? We will code. So your fetch and will contain this 2000. So program will simply go to the next instruction and continue. And program will take, if carry means, it will check the carry flag. If carry flag is 1, the condition is true, PC will get 2000. If you've written JC 2000, PC will get 2000 and program will take a jump to location 2000. If the condition is false, you said jump if carry, but there is no carry. That means carry flag is 0. That means we don't have to jump. If we don't have to jump, PC will not get 2000. It will not get 2000. What will it get? Nothing. By the time fetching is over, PC is already with the address of the next instruction. So nothing will happen. PC will simply get the address of the next instruction, which it anyways has. When fetching is over, PC has the address of the next instruction. So program will simply go to the next instruction and continue. So here I have written JC 2000. If there is a carry, program will jump to 2000 and go ahead. If there is no carry, program will simply continue to the next instruction and go on in a sequential manner. Please tell me, did you understand? So like this, there are several jumps. Jump if carry, jump if no carry. Jump if carry will jump if carry flag is 1. Jump if no carry will jump if carry flag is 0. Similarly, jump if 0. 0 means jump if the result is 0. If the result is 0, that means the 0 flag is 1. Jump if no 0 will jump if 0 flag is 0. Jump if parity even, that means parity flag is 1, parity flag is 0. Jump if minus and jump if plus. Minus means the result is negative. Negative means sign flag is 1 and plus means the result is positive, so sign flag is 0. Please tell me, is 0. Jump if no carry. Jump if carry will jump if carry flag is 1. Jump if no carry will jump if carry flag is 0. Similarly, jump if 0. 0 means jump if the result is 0. If the result is 0, that means the 0 flag is 1.
Jump if no zero will jump if zero flag is 0. Jump if parity even, that means parity flag is 1, parity flag is 0. Jump if minus and jump if plus. Minus means the result is negative. Negative means sign flag is 1 and plus means the result is positive, so sign flag is 0. Please tell me, are these clear? These four are very rarely used in programming. I mean, in all probabilities, you'll never use them as a student. These four are used a lot, especially JC, JNC and JNZ. They are used a lot. Example of JNZ is looping. So the next thing that I'm going to teach you is how to create a loop. Look here. So sign flag is 0. Please tell me, are these clear? Jump if minus and jump if plus. Minus means the result is negative. Negative means sign flag is 1 and plus means the result is positive, so sign flag is 0. Please tell me, are these clear? These four are very rarely used in programming. I mean, in all probabilities, you'll never use them as a student. These four are used a lot, especially JC, JNC and JNZ. They are used a lot. Example of JNZ is looping. So the next thing that I'm going to teach you is how to create a loop. Look here. Are loops important? Of course. All big programs are small programs put in a loop. Okay? A program to transfer 1 kilobyte or 100 kilobyte or a megabyte is the same as the program to transfer 1 byte. Once you transfer 1 byte, put that procedure in a loop and you'll transfer a whole block. The program to add a series of numbers is the same as the program to add one number. Add one number to your grand total, put it in a loop, you'll go on adding a series of numbers and so on. So all big programs are basically small programs put in a loop. So all I'm trying to say is, if you want to do serious programming, if you want to move ahead of adding two numbers, then you need to know how to create a loop. So that's what I'm teaching you. How to make a loop has nothing to do with what you do inside the loop. How you make a for loop is a separate knowledge, and what to do inside the for loop depends from program to program. Here I'm teaching you how is a loop created. In C programming, you have for loop, while loop, do while loop, etc. Here you do looping like this. It is much easier than any of those. Okay. First, you want to make an infinite loop. They are also useful. So you want to make an infinite loop. This is a program. This is a section that you want to do again and again. You put a label over here by the name back, any label you want to put. Just I've written the name back, you can keep it up, you can call it label, you can call it previous, you can call it whatever you want to. Put a colon, that becomes a label. Now here you want to go back, you want to execute this much and then go back. So you write jump back. Please tell me, this is which language? Assembly. When the assembler converts this to machine language, for jump there will be an opcode, for back there will be an address. Assembler knows what is this address. Assembler will substitute the address. Are you clear? If you are entering the program yourself in the memory, you know the address, so you won't be writing back, you will be actually writing the address. So on the kit, you write the address. On paper, you write a label. Are you clear? That label becomes an address when you are entering it in the kit. So you've written jump back. What will happen? Program will come up to here, jump to back, then come down, then go to back, then go down, then go to back, and this will become a loop. The problem is, this has become an infinite loop. Why has this become an infinite loop? Because you have not specified any condition. You just said jump. That means whenever it hits this instruction, it has to go back. So it will never be able to come out of this. Are infinite loops useful? Yes. Not like every day, but yes, you need them. Simplest example, a digital watch. Suppose you want to do a mini project, you want to create a watch and keep it in the beginning of your college or at the entrance just to remind students, hello, it's time, come. An address when you're entering it in the kit. So you've written jump back. What will happen? Program will come up to here, jump to back, then come down, then go to back, then go down, then go to back, and this will become a loop. The problem is, this has become an infinite loop. Why has this become an infinite loop? Because you have not specified any condition. You just said jump. That means whenever it hits this instruction, it has to go back. So it will never be able to come out of this. Are infinite loops useful? Yes. Not like every day, but yes, you need them. Simplest example, a digital watch. Suppose you want to do a mini project, you want to create a watch and keep it in the beginning of your college or at the entrance just to remind students, hello, it's time, come. What is a digital watch? All you need is 3 registers. An hours counter, a minutes counter, and a seconds counter. Initialize all the 3 registers with the value 0. Start incrementing the seconds counter.
When it reaches 60, make it 0, increment the minutes counter. When it reaches 60, make it 0, increment the hours counter. When it reaches 24, make everything 0. One day is over. Now, will the next day be any bigger? No, the same. So all you need to do is put this procedure now in a loop. When should the loop stop? Tomorrow? Day after tomorrow? 1 year later? When engineering is over? No, this loop should work forever, as long as there is power supply, it should work. That means it should be a what kind of loop? Infinite loop. Please tell me, did you understand? Like this, I can give you 100 more examples, but that's not the point. I just wanted you to know, yes, infinite loops are useful. So how do you make an infinite loop? By putting an unconditional jump. It's so simple. It's as good as just putting a circle. All you need to write is jump with a label. That's it. Did you understand? Even finite loops are equally simple. Look here. Okay. So now we're going to learn how to make a finite loop. A finite loop means there are n number of iterations. So suppose you want to do this loop 5 times. So in C program, it's as good as just putting a circle. All you need to write is jump with a label. That's it. Did you understand? Even finite loops are equally simple. Look here. Okay. So now we're going to learn how to make a finite loop. A finite loop means there are n number of iterations. So suppose you want to do this loop 5 times. So in C program, how do you make a for loop? You want to do something 5 times. You keep a count inside some variable I for iterations anyway. So you keep your count in there in case you didn't know. You keep that count inside the variable I. Here, instead of variables, you'll be using registers. Same idea. I want to do this loop 5 times, so I'll initialize some register with this count 5 and we'll go on decrementing the register till it becomes 0. So simple. So put this count 5 inside some register. For that you use an instruction like MVI. Please tell me which register will you use to hold the count. There are 7 registers A, B, C, D, E, H, L. You can use any register. Okay, let me be clear. You can use any register. But out of preference, just asking you as your choice, which register would you want to use? Thank God you didn't say A. That's it. If you said A, then listen to what I'm saying. Never use A for unnecessary things. Okay? Why? Because A is your most important register. It's your trump card. Add, subtract, and or XOR, rotates, etc. They all work on A register. If you wasted A register in holding the count, how will you do anything inside the loop? Are you understanding the? It's not time for break. That's we did one session, okay, already. Why my hair are so messy? 10 comments, I think no. H तो LXIB यहाँ से होता है बिकॉज एक बाइट का हमारा ये LXIB हो जाएगा. दिस इज 1 बाइट और दिस इज 2 बाइट. तो 2000 हायर एड्रेस हायर बाइट लोअर एड्रेस लोअर बाइट. रिटन इंडियन रूल. पहले इसको फेच करेगा, डिकोड करेगा, फिर इसको फेच करेगा, फिर इसको फेच करेगा. ठीक है. 3 मशीन साइकिल यूज होंगे यहाँ पर. इसमें ऑपकोड फेच यूज होगा, इसमें मेमोरी रीड इंस्ट्रक्शन मेमोरी रीड फेच होगा. सॉरी फेच नहीं, मेमोरी रीड होगा इसमें, और इसमें मेमोरी रीड होगा.
समझ रहे हो बात? इसमें 4 टी स्टेट्स यूज होंगी, इसमें 3 टी स्टेट्स यूज होंगी, इसमें 3 टी स्टेट्स यूज होंगी। टोटल टी स्टेट्स कितनी हुई? 4 5 6 7 8 9 10 10 टी स्टेट्स यूज हुई 3 मेमोरी साइकिल्स में। बात समझ आ रही है? जैसे क्वेश्चन आया था मिड टर्म में, वो जो प्रोग्राम बोला था हमने लोड करने 1000 पे, तो वो कितना लोड होगा, वो वही पूछ रहा था। वो पूछ रहा था। तो एक्चुअली मैं वो प्रोग्राम पूरा लिखूंगा अभी लास्ट में, जब पूरा सब हो जाएगा वो पूरा क्वेश्चन ही हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे, कैसे क्या होगा कैसे क्या होगा, समझ रहे हो? अभी आगे क्या बताया? यहाँ पे नए स्टूडेंट भी आए हैं, वो उनसे भी पूछ लो, कहीं उन्हें प्रॉब्लम तो नहीं है, उन्हें समझ में आ रही है नहीं बात। नए स्टूडेंट जो अभी अभी ज्वाइन किया होगा उन्हें समझ आ रहा है? बोल देना अगर कोई दिक्कत हो तो। नए आई मीन जो स्पॉट राउंड वाले हैं जो। अच्छा स्पॉट राउंड वाले हैं, हाँ स्पॉट राउंड वाले बोलो। अभी आ रहा है वैसे, एक बार पहले बता दिए होते कि हो रहा है तो फिर पहले तो ज्वाइन कर लिए होते, थोड़ा लेट हो गया। हाँ ज्वाइन करना। हाँ कोई बात नहीं, अभी धीरे धीरे समझ आ जाएगा, क्योंकि मैं हर एक सेक्शन में बताता रहूंगा क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि हमारा सारा छोटा हुआ है, मैम कोई भी मतलब प्रोग्रामिंग अभी करवाई नहीं है और एग्जाम में दे दिए तो कोई ठीक है। तुम लोग को कुछ बोल रहे हैं क्या कि नंबर दे देंगे प्रोग्रामिंग वाले क्वेश्चन के? मैम ऐसा तो कुछ भी नहीं करती है, मैम सीधे 0 देती है। मैम बोली थी सर यार के कभी मैम ने क्या बोला था? मेरा उनका भी वही हाल है, सेम ना करवाए वाला। ना मैम ने क्या बोला था जब तुम लोगों ने बोला कि ये क्वेश्चन आया पढ़ाया नहीं अभी तक? अरे मैम के खुद ही नहीं बनता प्रोग्राम, मैम क्या करूं? अरे चलो कर अभी कर लो यार, ये बात तो मेरे आ जाएगी। पढ़ो बोलने दो यार। चलो अरे भाई बात तो मेरे आ जाएंगे फिर। हाँ 7 अभी टाइम यार 11 बज गए, तुरंत पता चला साथ ही हो पाए। 7 देखेंगे, हमें एक्यूमुलेटर को लोड करना है डायरेक्ट, कैसे करेंगे? एलडीए एम point, don't use a unnecessary. The strongest team registers your team A is your main player, don't wait. Okay, so don't keep your count in A. You can it. They all work on A register. If you wasted it holding the count, how will you do anything inside the loop? Are you understanding the point? Don't use A unnecessarily. It's your strongest tool. It's your main player. It's your team registers. Your team A is your main player. Don't waste it. Okay. So don't keep your count in A. You can. It's not like you can't, but don't, because you need A to be free to do programming. Okay. So keep any register. I'm keeping the count in B register, or you can keep it in C or whatever register you like. So MBI B, 05. So I've initialized B. Register with the value 5. Now my idea is I will go on doing this loop again and again till the time B becomes 0. So in every iteration I will decrement B. So I've written decrement B. What will happen? First iteration, one iteration is over, B has become 4. I'm not going to write jump. If I write jump, what will happen? It will always jump. Then your count is immaterial. It will again become an infinite loop. I put a conditional jump over here. J and Z. J and Z stands for jump if not 0. So if the count has not become 0, it will jump. So first iteration, the count is 4. 4 is not 0. It will jump. Next iteration, 3. Still not 0. Jump. 2. Not 0. Jump. 1. Not 0. Jump. 0. It has become 0. I said jump if not 0, but the count has become 0. That means the condition is not satisfied. That means will it jump? No. If it will not jump, will it just sit there? No. By default, program goes to the next location.
So it will automatically go to the next location and come out. That means it will do your 5 iterations, break the loop and go ahead. This is how you make a loop. Isn't this simple? Isn't this far simpler than learning for syntax? For bracket, then I is equal to 0, I less than 100, I plus plus, O equal to. So much simpler. Put a count in a register, decrement a register, jump if not 0. As simple as that. A few simple things over here to remember. I've given a count of 5. How many iterations am I going to get? 5. 5. Not 4, not 6. They are drawn on the board. Count the lines. There are 5 lines. Those are the iterations. I'll show you. You given a count of 5. First iteration count becomes 4. 3, 2, 1, 0. You have executed the section 5 times. Your count has become 0. The loop will break. You will go ahead. That means this section got executed 5 times. So if you want to add 100 numbers, write a program to add one number and put it in a loop with a count of 100, not 99, not 101, exact 100. You want to transfer 20 numbers, write a program to transfer one number, do it in a loop with a count of 20, and so on. Tell me, did you understand this? Now give me one more example. Come on yourself. Suppose this is a section. I've called it back. I want to do this loop 8 times. What will I do? MBI. Yeah, come on, MBI. Suppose this is a section. I've called it back. I want to do this loop 8 times. What will I do? MBI. Yeah, come on, MBI. Yeah, come on, yeah, choose a different register. Don't be a copycat. MBI C, 0A. Blah, blah, blah. Go on, go on. What are the 2 instructions you write? Decrement C and JNZ back. What will it do? First time C will become 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Exactly 8 iterations and the loop will break. And so on. Please tell me, did you understand? Now here is one question. This is a question that will not come to your mind right now, but when you finish this video, then you try to revise this by yourself, probably the first time, the second time. When you totally through with this, that's when you will get this doubt. And then this doubt doesn't let people sleep. Like, what happened? Look here, I'll tell you what the doubt is. Here I've kept my count in B register. Here I've kept my count in C register. Both places I'm writing J and Z. What is J and Z? Jump if not 0. When mu P, you are the mu P. When you look at J and Z, you understand the full form. J and Z is jump if not 0. What you don't understand is whom to check. Here the count is in B, here the count is in C. So how does J and Z know whether it has to check B register or whether it has to check C register? Did you understand the question? Yeah, Did you understand that's my doubt, sir. J and Z just is J and Z. How does it know which register has to be checked? Now people come up with funny answers. Because you don't know, then you guess. People say, no problem, mu P will check one instruction behind. No, mu P can never go back in time. Get this clear. Like B cannot. Time just goes ahead. You cannot go back. You can find a video. You can't go back in time. Mu P cannot go back in a program. Okay? Have I made myself clear? If you're doing 8085, that means you just begin your journey of learning microprocessors. The journey is very long. If you learn all the microprocessors, you're going to spend years learning this. Remember this point. In no microprocessor, you can never backtrack a program. Are you clear? Mu P can never go back in a program and see what happened. That doesn't work. It only goes ahead. Like time, you cannot go back in a program. So there is no way mu P can go back and see what happened. Then how does J and Z know whether it has to check B register or it has to check C register? The answer is it doesn't check B. Neither is this J and Z going to check C. Both the J and Zs check the 0 flag. Did you understand my point? A conditional jump never checks a user register. It checks the flag register. That is why all conditional jumps are based on various flags. Are you clear? This JNZ is not checking B register. It is checking the 0 flag. Is this a bad thing or a good thing? Good thing, because this is what gives us the flexibility to keep the count in any register. No matter what register you decrement, the flag will be affected. JNZ checks the flag. It doesn't check B register. If I'm stressing so much on this point, it is very important. I won't be. There's somebody who's been teaching this subject since 18 years and is spending 5 minutes on one point. He definitely knows what he's talking about. Okay? This point will save you from making mistakes. JNZ is not checking B register. It is checking the 0 flag. Now, I'll tell you why I'm stressing on this point so much. You give students programs, you teach them in the class, yeah, they've understood everything, great. Then when they do it in practicals, maybe practically
जो एड्रेस के करस्पॉन्डिंग डेटा होगी वो एल में जाएगी या एच में। ओके हायर बिट हायर एड्रेस नहीं वो हायर लोअर का लोअर में जाएगा। अच्छा एल और एच मतलब वो दोनों उसके हैं, ठीक है, एब्रिविएशन है दोनों, लोअर और हायर। हाँ यस नहीं लोअर हायर एब्रिविएशन नहीं है, एच मतलब हायर नहीं होता है, लोअर मतलब एल मतलब लोअर। ये एच हमारा, अरे यार एच हमारा रजिस्टर के नाम है, बस ये इतना याद रखना। रजिस्टर के नाम है, डीसी हो गया, एच से हायर एल से लोअर, ये ना भैया। हाँ यस एग्जैक्टली। लेकिन ये है ऋषि की जो पहला अगर मैंने ये लिखा है LHLD 2001H, तो जो 2001H की करस्पॉन्डिंग जो डेटा है वो पहले एल में जाएगा, यस। और उसके बाद फिर 2002 जब होगा तो वो एच में जाएगा, यस। और ये इंक्रीमेंट तो अपने आप ही प्रोग्राम काउंटर में हो जाएगा, अपने आप। ओके, बाय अंडरस्टूड है, इनबिल्ट है। और वो एड्रेस इंक्रीमेंट होता है ना, इससे एड्रेस ओवर इंक्रीमेंट होगा प्रोग्राम काउंटर। ओके हाँ 2 बार होगा, एक तो यहाँ से यहाँ होगा, एक अगले नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए होगा पीसी, समझ रहे हो? ओके हाँ ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा ऑपकोड है LHLD, ये हमारा क्या है, ऑपरेंड है 2 बाइट का। ये हमारा एक मेमोरी एड्रेस में आएगा और ये हमारा अगले 2 मेमोरी एड्रेस में आएगा इन द रैम, ठीक है। क्या करेगा, यूपी पहले इसको फेच करेगा ऑपकोड फैच से, ठीक है। देन नेक्स्ट मशीन साइकिल में वो इसको फेच करेगा जो हायर एड्रेस है, फिर इसको फेच करेगा जो लोअर एड्रेस है। देन इट विल इंक्रीमेंट द पीसी एंड द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो भी होगा उसमें आ जाएगा उसका एड्रेस, ठीक है, पीसी के अंदर। मतलब तो 2 बार करता तो यही है ना, जो डाटा दे रखा है वो मूव करता है एचएल पे, डेटा तो मूव करता है। हां एचएल पे मतलब लोड इमीडिएटली एचएल पे। जब भी हम LHLD इंस्ट्रक्शंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब कि वो 2 बार इंस्ट्रक्शन को ऑपरेट कर रहा है। जैसे अभी हमने LDA का यूज किया था तो उसमें बस एक ही बार में हो गया था, एक बार में उसने लोड कर दिया एक्यूमुलेटर में। लेकिन यहाँ पे जब हम LHLD का यूज कर रहे हैं तो ये 2 बार एग्जीक्यूट हो रहा है। 2 बार एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, 2 HL पेयर जो है तुम्हारा, ये 16 बिट का रजिस्टर है, ठीक है। तो इसके लिए तुम्हें 8 बिट के 2 ऑपरेंड चाहिए। ऑपरेंड मतलब डेटा मतलब, तो एक बार H के लिए चाहिए, एक बार L के लिए चाहिए। हमने लोअर बाइट का लिख दिया है, हायर बाइट का अपने आप इंक्रीमेंट होके H में चला जाएगा उसका डेटा, जो कि तुम्हारा ये है प्लान, ठीक है। आगे समझ? ठीक है हाँ ठीक है भाई। एक बात बताओ, इसमें LHLD क्यों यूज करना है? MOV से भी तो हम मूव कर सकते हैं डेटा। MOV से मूव कर सकते हैं, अच्छा MOV से करते हैं। MOV फिर क्या करना है? अगर वो लिख दे रहे हैं H, 20H और H, 20H में लिख दें 20H और MOVL, 10H कुछ लिख दो 10H, ओके। तो ये भी हमने क्या किया है? अरे कार्तिकेय, इसमें 4 बिट इसमें मेमोरी यूज हो गई, और जो LHLD जब यूज कर रहे हैं ना तो उसमें 3 बिट की मेमोरी यूज होगी, इसलिए वो यूज करते हैं। अच्छा, हमें मेमोरी का ऑप्टिमाइजेशन भी तो करना है। ओके सही कह रहा है। ये तुम्हारा 4 बिट का होगा, ये तुम्हारा कितना का होगा? 1। हाँ, और इसमें क्योंकि एक साथ ही H और L दोनों में आ जा रही है वैल्यूज, उसमें अरे डेटा और उसमें अलग अलग आ रही। सही है। Please remember that while writing instruction you have to optimize the use of memory. मेमोरी को भी ऑप्टिमाइज करना है। but it doesn't matter if your 5 line instruction is working in 3 lines and also saving 1 byte, but still that program is not compatible with me. I'm not going to give a single mark. ठीक है, इसलिए मैंने देखा हुआ मेमोरी को यूज करना है, ठीक है। मेमोरी को भी मैं देखना है। अभी शुरुआत में इंस्ट्रक्शन हम लोग जैसे कि प्रोग्राम, अभी मेमोरी को ज़्यादा देखेंगे नहीं, हम लोग बस लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। फिर हमें अच्छा एक बात बताओ, तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ मेमोरी का, लिखा हुआ है। ठीक है हमें एक्यूमुलेटर में क्या स्टोर करना है?
00h, B में स्टोर करना है हमें 00h, C में स्टोर करना है 00h। हम पहला जो तरीका है वो यूज करेंगे, मान लो फॉर एग्जांपल MVI यूज करेंगे, MVI A, 00h, MVI B, 00h, MVI C, 00h, 2 2 2 6, ठीक है। लिटिल स्मार्ट MVI A, 00h, ठीक है, 2 बाइट इंस्ट्रक्शन। नाउ MOV B, A, 2 बाइट इंस्ट्रक्शन। क्या हो रहा है, हमने पहले इसमें हर वन बाइट ओके सॉरी 1 बाइट। नेक्स्ट MOV C, कितना हो रहा है इसमें 4 बाइट। कितना कम हो गया 2 ही तो हुआ है, क्या दिक्कत है, हम ये भी कर सकते हैं 2 यार, ये इतना छोटे में हुआ है। बहुत मिलियंस ऑफ लाइंस होंगी हमारे पास इंस्ट्रक्शन में, बड़े बड़े प्रोग्राम होंगे तो 2000 भी हमारे लिए फिर डिफिकल्ट हो जाएगा। डेटा का डिफरेंस बहुत बड़ा हो जाता है बड़े प्रोग्राम में। परसेंटेज ले लो, ठीक है, परसेंटेज होता है कि 33% कम हो गया। हाँ 33% कम हो गया। तीसरा बहुत स्मार्ट तरीके से करते हैं, लेट्स से हमने SUB यूज किया हुआ है, ठीक है। सबट्रैक्ट A मतलब क्या है, A में स्टोर कर दो, A से A को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो A में कितना आ जाएगा 0। इसमें जो कुछ भी होगा A माइनस A हो जाएगा और 0 में स्टोर A में स्टोर हो जाएगा, मिनट में स्टोर हो जाएगा। कितना बाइट का है 1 बाइट। MOV B, A, MOV C, A, कितना बाइट का हो गया ये 1 1 1, 3 बाइट। स्मार्ट तरीका। सब एक यूज करेंगे वो तो एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा ना। हाँ एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा। सब A मैंने मतलब क्या है कि A माइनस A जो भी होगा A माइनस A विच इज 0, वो एक्यूमुलेटर में ही आ जाएगा, A में ही आ जाएगा। थोड़ा सा स्मार्ट तरीका है ये, मतलब इन सबसे अगर हम मेमोरी को ऑप्टिमाइज करते हैं तो। मैडम के अकॉर्डिंग है कि नहीं? मैडम के अकॉर्डिंग, सबके अकॉर्डिंग है ये तो। कोई भाई मैडम के अकॉर्डिंग होना चाहिए, क्यों नहीं होगा भाई है भाई, ऑप्टिमाइज हो गया तो गलत क्या है? गलत क्या, मैंने सब यूज किया, सबट्रैक्ट वाला जो मैंने इंस्ट्रक्शन यूज किया हुआ है, क्या दिक्कत क्या है? ठीक है, ठीक ऐड भी कर सकते हो, एक बार रिपीट कर देने से सब्ट्रैक्शन वाला। ओके ऊपर से पहले से फर्स्ट से। exam or college practicals. They type the program and then they're not getting the result. We call up, sir, it's the same program. Why am I not getting the result? I ask them, you think it's the same. Let me see whether it's the same or not. Send me a picture on WhatsApp. When you see the picture, you realize the mistake. Is writing decrement B over here necessary? Yes, that's how B will be decremented. You write it outside the loop or inside the loop? Of course inside the loop, because it has to be decremented in every iteration. But when you say inside the loop, this whole span, this much space is inside the loop. Is writing decrement B at the end necessary, or we can write decrement B anywhere in the loop? At the end. Did you understand? This is the mistake students make. These are rookie mistakes. People make them innocently because they don't have the knowledge behind it. Some people make mistakes and learn. Smarter people learn from others' mistakes. So I have seen people making these mistakes. I'm telling you, giving you a heads up, don't make the same mistake. If you write decrement B over here, what will happen? Will B get decremented? Yes. Will the zero flag be affected? Yes. But from here to here, if there is any other arithmetic or logic operation, flags will again get affected. If you remember flag register, 10 times I said this point in that answer. Flags change after every operation. Flags only give you status of the current result. Do you understand my point?
So you wrote decrement B over here. Yes, B became 0. Yes, 0 flag became 1. But from here to here, you did several operations because of which flags kept getting changed. Now J and Z is not seeing the effect of decrement B. It is seeing the effect of some funny instruction, and based on that, the loop will have some funny number of iterations which nobody predicts till the time you see what is written inside. Irrespective, it is not the number of iterations which you wanted. Please tell me, did you understand my point? So, the idea is between decrement B and J and Z, there should ideally be no instruction at all, or even if you want to keep an instruction, it should be such an instruction that doesn't affect the flags. Who affects the flags? ALU. So don't do any arithmetic or logic operation between these two. Do a move and all, it's okay. Ideally you should not, but even if you do it, doesn't matter. But don't do any add, subtract or any arithmetic operation between these two or logic operation.